Hello dear students, good morning to one and all. Now in this video class we have discussed another disease which is known as ringworm. Okay, so now we can discuss about the one type of disease which will be so in our body or in case of different living organisms and some animals. It is a one type of common disease also which is known as ringworm. In this disease, the one common thing is it will be affect to all the animals including humans. Okay, तो এই जो डिजीज रे कोन होचे हमरो प्रत्येक प्रकार जति सब एनिमल्स अछन सेमानो मध्य हुए एवं एटा ह्यूमंस मानको मध्य एटा देखा जाय. तो जनरली अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंट पार्ट्स of our body, it will be affected by the different type of organisms, but the genus is the same. That means the causative organisms genus is same. तो कौन कहला देखो पिले आमे स्टार्ट करिया ringworm. It is a one type of fungal disease. एटा को आमे कोन बोली कहबा one type of fungal disease. That means it will be caused by the fungi. फंगी जोड़ा कहूचे आमे हला ने फंजाई द्वारा जोटा हमको एफेक्ट करूची जो फंगस जाका हम कोन करते एफेक्ट करंती एवं सही जो डिजीज टा हम कोन बोली कहूचे रिंगवर्म बोली कहूचे. तो देखो कोन कहला फर्स्ट it is a fungal disease. It is a one type of fungal disease. The causative agent of ringworm, the main causative agent of ringworm has a fungus. What one type of fungus would that means the fungus belongs to the genus Tinea. That means there are several number of fungus are there. बहुत गुड़े फंगस अछंदी हला नै बट सेमानकर समस्तंकर जेनस टा कोन आमे पढिथिले बायनोमियल नोमेनक्लेचर रे गुड साइंटिफिक नेम देला कोन होचे द फर्स्ट लेटर इज द जेनस एंड द सेकंड लेटर इज द स्पीशीज ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. से भलिया हमर कोन कहला एई जो रिंगवर्म जो डिजीज टा हम करोचे जनरली एई जो रिंगवर्म डिजीज रो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रो जेनस दैट मींस द जेनस इज द टिनिया. तो जेनस टा हमर कोन होची जनरली टिनिया रोची. So let's start the causative organism. According to different parts of our body, हमारा विभिन्न parts of our body को नहीं की because this ringworm will be happen in the different parts of our body. So according to the different parts of our body, the fungus is different. Like the causative organism, here some places of our body is there, and here some causative organisms who can cause ringworm to us. Generally, the ringworm is look like a circular scaly patches. Generally, ringworm मान देखियो तमे हमरो जेहरे कोन होइतो एंती रिंग राउंड भले है कि तो एटा कोन होतो स्मॉल स्कैली पैचेस रेड स्कैली पैचेस ए भलिया हला नै जनरली ए भलिया हमर रिंगवर्म ता हो जाय थाए. ए जगह हमर गोटे स्किन रे मन कर लेट दिस इज ए स्किन and this is the scaly patches. ए जाखला तार स्केली पैचेस जो जाके हमर प्राय हमर जनरली स्किन रे देखा जाय हला. तो ए प्रकार हमर स्केली पैचेस हे थिबो एटा को हम कोन बोली कहते रिंगवर्म. तो जनरली इट इज द स्किन हला नै एटा हला हमर स्किन ए जो स्किन रे एटा हला हमर दिस इज द रिंगवर्म. ए भलिया रिंग 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 एनी पर्सन जे कोनस पर्सन गोटे रिंग हे कि फुली जाइथो एवं सेठी इचिंग होथो एटा को हम जनरली तमे जदी भी तमे नेट रे इमेज जदी मारियो रिंगवर्म तार डायग्राम जाको पळ आसीयो. तो देखो कोन कहले हमर जनरली द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हमर बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को नै कि तार कोन हिची पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जाको चेंज हो जांदी बट द जेनस रिमेन्स सेम. दैट इज द जेनस बिलोंग्स टू द Tinea. Okay, if the ringworm will be happen in our any body parts or our body, आम जदि देह रे जे कोनसी पार्ट रे बा देह रे जदि स्किन रे जदि कोठी होचे that means the causative organism is the Tinea corporis. Okay, तो इटा असले हमर Tinea corporis which can cause in our body. Body रे जदि हला तक हमें कोन कहबा Tinea corporis. Next असला feet माने कोन रे पिले पाद. That means where some corners आमर जनी फिंगर रे जो corners जाक अछि फिंगर रो corners
हला नै ए भले हमर फीट रो मध्ये किछि कॉर्नर्स रे बा फीट रे एग्जैक्टली जदी सेठी जदी ई भले रिंग वर्म जदी हमके इफेक्ट करछि एंड जनरली दिस डिजीज इज कॉज्ड इन द रेनी सीजन एंड दिस इज द टाइम वेयर द any time will be rain will be there then it will be affected ita ebe amar chalichi madhya barsa dino to ei samay re ita hoche to feet re jodi amar jodi ringworm ta attack korche jo feet re jo organism ta am positive organism ta am attack korche ta na hala tinea pedis okay feet re if it will be attacked to our feet or the if the feet will be infected by the ringworm name is the positive organism name is the tinea pedis is the positive organism ro naam kon hala tinea pedis next if it will be attacked to the groin areas sir what do you mean by groin areas let this is our let this is our reproductive system okay is the reproductive system either it is from the male or the female the this part is known as the cornea portion is the portion da amar da mane kon je the fold skin portion fold skin part like the fold skin part of reproductive system এই যে আমার যে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমস র যে ফুল স্কিন পার্টটা এই যে অপর পার্টটাকে আমি কোন বলি কোচে রে groin area বলি কোচে when these scaly patches generally here some sweats are secret rapidly এটি আমরা কোন generally sweat अधिक secret होचे and the temperature also increases in that particular points and it will be covered all time so that there is a more chances to affected in that particular area that is the groin area here the causative organism name is the tinea cruris ei jo amaro jo part re jota ki amaro groin area कहली तुमको fold of skin where the reproductive system is there either it is a male or a female the main causative organism is the tinea cruris ei jo part ta ke amar होची groin area रे सेटा को हम कोन बोली कोचे tinea cruris the causative organism is the tinea cruris next asla skull देखि दिबो पिले तमे जनरली स्कल्प माने हमर जो चुटी हला नै जो हमर स्कल्प जो स्कल रे जो हेड पोर्शन रो ऊपर एई सब जा पोर्शन रे जनरली देखियो affected person manakar ehi portion by any part of our head or in the skull portion there will be some infected or they have the red scaly patches red color scaly patch hi heithibo hala nei joda ko ame kon boli koche one type of ringworm mate seida scaly patches dekha jaye scalp re jodi hala tahle ame tar positive organism na hala tinea capitis tar na hala kon amaro positive organism ro na hala tinea capitis next when it will be affect to our face रे जदी हे गेला face रे any part of the face रे जदी जे कोन part रे जदी हे गेला where the mainly it will be affected where the different type of hairs will be growth जे कोन से hair जो हमर growth होते से जदी पर्सन जाकर जदी हमर face रे जदी अटैक करते then the causative organism is the tinea faciali सेटा हम कोन बोली कोते tinea faciali so to depending upon the different parts of our body or different place of our body the causative organism will be changes or the but the genus will be the same that is the tinea जदि तुम मल्टीपल चॉइस रे पचारछि what is the main causative organism of the ringworm that means you have to write the tinea okay tinea family or the fungal which belongs to the genus tinea this belonging fungus will affected to different parts of our body okay so this is the different parts of our body and the different causative organism which can cause ringworm to us so this is all about your causative organism आमे प्रत्येक जिंस डिजीज पळला हम चारटा जिंस देखुतले तो एटार गला हम फर्स्ट गला causative organism सला नेक्स्ट देखियो आमे हाउ द मोड ऑफ स्प्रेड एटा को भलिया स्प्रेड होछ इट इज ए वन टाइप ऑफ communicable disease एटा गोटे को हम communicable disease मलिक मध्ये कहि परिबा काहे कि when we can touch to a particular person who is suffering from the ringworm let's think about a person in your class in your any student have affected to the ringworm माने कर भाबा जे कोन से हम क्लास रे गोटे पिला को जे ringworm ता हिच तो साइड रे जो पिलाटा बसछि दे विल बी माने भाबा ए पर्सन हमर हाथ रे हि जाइछि बा एनी बॉडी पार्ट्स रे जे कोन से पार्ट रे हिछि से ता साइड रे बसछि ता से पार्ट को सब बळे कोन होछि टच होछि
then it will be spread from to the infected person to the healthy person. तो ताठू आबाक पळ आसला काहे की से जो स्किन रे हमर बारंबार टच हला तो एटा एक कम्युनिकेबल डिजीज तो देखो कोन होची हाउ इट विल बी मोड ऑफ स्प्रेड इट विल बी स्प्रेड थ्रू द बॉडी कांटेक्ट देखो मेनली it will be spread through the body contact जदि गोटे इन्फेक्टेड पर्सन भाव गोटे इन्फेक्टेड पर्सन रो जे कोनोसी पार्ट रे गोटे हेची आमे जाइता टच करले आउ से हातटा को आमे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी रे आमे टच करजे आमे बॉडी टच करजे ता फल रे मध्ये एटा आमे इन्फेक्शन होबार चांसेस अछि एंड द इनक्यूबेशन पीरियड इज मु लिखि दोचे एटा जनरली कोठेले हला नै incubation period for ringworm is 4 to 14 days 4 रु 14 दिन भितर एटा हमको देखा जिवो एवं द फर्स्ट सिम्पटम इज द इचिंग फर्स्ट सिम्पटम्स कोन देखा जिवो इचिंग देखा जिवो तो कोन हला हाउ द मोड ऑफ स्प्रेड इट विल बी स्प्रेड थ्रू द बॉडी कांटेक्ट जदि इन्फेक्टेड पर्सन रो बॉडी संगे जदि आउटे हेल्दी पर्सन जाई ता संगे कांटेक्ट करिवो आइदर बाय टच हला नै और एनी पार्ट्स तार जो पार्ट रे हेची सेटा टच करिया द्वारा हमर कोन होची मोड ऑफ स्प्रेड होबार चांसेस अछि नेक्स्ट आसला कंटामिनेटेड combs माने कोन पानिया जोडा हम कहउचे where we can combs to our head if a person will be suffering from scalp infection जदि गोटे पर्सन भाबो स्कल्प इन्फेक्शन द्वारा से बा स्कल्प इन्फेक्शन रे रिंगवर्म के स्कल्प रे दैट मींस दैट टीनिया कैपिटिस विल बी causing the scalp ringworm then if a infected person will become their head and that there will be a chances of spreading that type of that disease हला नै ए जो प्रकार मध्ये हमरा डिजीज ता ट्रांसफर होबार चांसेस रही अछि नेक्स्ट कंटामिनेटेड towels जदि infected if an infected person will be use the towels and it will be not properly washed सेटा जदि properly धुआ होइनी एवं that particular towels will be used by the any person then they will be suffering from ringworm so it is a one type of communicable disease one person to another person कास्ट्री and it is a one type of fungal disease बोली मध्ये हम कहते जदि गोटे इन्फेक्टेड पर्सन ता टॉवल यूज करूची किछि से जिंसटा को हम क्लीन करिया पय से सहाय्य माने से क्लीन करिछि से रिंगवर्म टा को एवं से पर्टिकुलर टॉवल्स टा को जदि आ गोटे पर्सन यूज कला बा तार से टॉवल्स टा को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी रे जदि से कांटेक्ट रे आसला देन देयर विल बी अ चांसेस ऑफ contaminated by the through the contaminated towels it will be spread from one person to the another person next napkins contaminated napkins hala to kon kala to jodi if a person that means any infected person if can use these things and we can avoid to touch these things ame eso jinsa ko ame touch kariba nahi because if we can touch them then there will be a chances of spreading of this disease so it kon kala amar contaminated combs contaminated towels and contaminated napkins if an infected person will be used then we have don't touch or there will be a chances of spread of this disease through this contaminated comb towels and napkins next infected pets माने कोन कहला देखो पेट्स माने कोन कहला मु कहिली एई जो प्रकार रोगटा जो फंगल डिजीज हमरो एनिमल्स मानन को मध्ये होवे इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बोली मध्ये मु कहिथिली हमक तो होची एनिमल्स मानन को मध्ये तमे देखिथिबो डॉग्स कैट रैट काउ बफेलो ए सब जाक जदी इन्फेक्टेड एनिमल्स मानन को हेची द रिंगवर्म टा एंड वी कैन टच देम लेट्स थिंक अबाउट इन आवर हाउस we have a one dog or a one cat and that particular cat or the dog will be infected by the ringworm and we can touch to that infected dog or the pet then this disease will be spread from that animals or that pet to us आम घरे जो कुकुर बा बिल्ली आम जहा किछि पुसुचे ताको हेछि आमे ताको आमे कोन कले वी कैन टच देम आमे ताको टच कले देन से जो इन्फेक्टेड पेट रो मध्ये हमको ए जो रोगटा आसीवार चांस अछि तो एटा कोन कहला इट विल बी ट्रांसफर और इट विल बी स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पेट टू अज इन्फेक्टेड पेट टू हमको मध्ये आसीवार चांसेस रही अछि नेक्स्ट आसला इफ ए पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम रिंगवर्म जदि गोटे पर्सन ए जो रिंगवर्म डिजीज रे सफर होउची व्हाट आर दिस साइन एंड सिम्पटम्स सेई जो लोक पाखरे कोन कोन तारो सिग्नल साइंस एंड सिम्पटम्स देखा जो कोन कोन सिम्पटम्स देखा जो फर्स्ट आसला रेड स्कैली पैचेस लाइक दिस
एटा कोन होची हमर रेड कलर रो स्केली पैचेस देखा जो हला जनरली एठी हमर कोन है जो रेड कलर हे जो एवं स्केली पैच माने कोन बिले गोटे पर्टिकुलर जगह रे सर्कुलर हे की किछ गोटे जिंस गोटे माने सेठ हमर सेल जा को डेट करी की एबनॉर्मल सेल जा को नष्ट कर दो एवं से पाखरे गोटे स्केली पैचेस हे जीवो एंड दे हैव दिस शार्प एज एवं सेमानकर शार्प एज जाक मध्य रही थिवो तो देखो कोन होचे हमर जनरली दिस इज द स्किन ए जो स्किन रे कोन हला एटा मन को रेड स्केली पैचेस हला नै ए जो स्केली पैचेस रे ए भलिया हमर डॉटेड हेगी ए भलिया पैच जाक देखा जिवो बुझ पारलो नेक्स्ट कोन असला साइन एंड सिम्पटम्स द फर्स्ट साइन एंड सिम्पटम इज द स्केली पैचेस एंड वी कैन डिटरमाइन इट बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन हमें देखि कहि दे परिबा कोन हेची नेक्स्ट असला इचिंग कुंडिया होथो एवं ए पर्टिकुलर दिस डिजीज इफ वी कैन कॉज इचिंग then it will be spread more and more जत्ते समय हमें आको इचिंग करिबा सेते इटा कोन हबो एठु में थेगा हमर थ्रो बॉडी हमर काहे स्प्रेड हिजो हम एठी इचिंग कला पर हम हाथ धोइलेनी हम जाय के हम विदाउट इफ वी कैन इचिंग दैट रिंगवर्म and we can toss to different body parts it will be spread through the body ita amar body jaga madhya spread he jibo hala ne to itching hochi seiti amar sign and symptoms for main itching to avoid itching first asla ame avoid itching kariba ebong jete ame itching kariba seita aur more and more times amu itching kariya pai ichha lagutho but ame itching kariba thu dure rahiba but it is the one type of symptoms which will be viewed in case of ringworm next the patches have the sharp edge that means এই जो पैच जाकर कोन अछि एज ई जो एज ता हमर जनरली ई जो स्किन टू टिके उठी की थिला बळे हमु लागे हला ने दैट मींस दे हैव दिस शार्प एज ई जो हमर जो रिंगवर्म रो पैचेस रे कोन होचे हमर शार्प एज देखा होचे तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइन एंड सिम्पटम्स एबे देखिले हमें साइन एंड सिम्पटम्स कोन कोन देखा हला पले रेड स्केली पैचेस देखा हला ता संगे किछि इचिंग हला एवं ता संगे द पैचेस हैव दिस शार्प एज नेक्स्ट this is the sign and symptom next one is the diagnosis how we can know ame kibholiya janiba the particular disease is a ringworm kibholiya ame janiba ta ame diagnosis kariba dekhiba porikha kariba kon kala the skin culture test that means the skin culture that will be affected skin culture will be taken and shown in our electronic microscope then we can determine we can identify the tinea fungal okay or tinea fungus. So first one is the in the diagnosis we have take the skin culture test. I am first kon kariba skin culture test kariba. Next one is the physical examination. Physical examination माने कोन हमें जनरली ताको देखि मध्ये कहि दे परिबा माने with our naked eye खाली आखिर मध्ये हमें देखि physically हमें देखि कहि परिबा that disease is a ringworm because they have a particular leg like structure or the circular structure and having the different type of patches and they have this sharp edge जदि इटा तथ्य हम physically मध्ये देखि कहि दे परिबा so this is all about your diagnosis. Next one is the prevention and control. एई जो disease टा को हमें कंट्रोल बा प्रिवेंट के भलिया करि परिबा कोन करि परिबा जो सब द्वारा इटा हमर स्प्रेड होची ए जो मोड ऑफ स्प्रेड जो द्वारा इटा स्प्रेड होची ताको हमें अवॉइड कर दबा से सब जिंस करिबा नाही हल नै ताहले इटा हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर दी परिबा तो फर्स्ट असला इन द प्रिवेंशन कंट्रोल we can do shampoo regularly if we cut our hairs जतो कि हमें shampoo regularly when we cut hairs आमे जतले चुटीटा काटू सैलून रे से समय कोन होची द पर्टिकुलर सैलून रे कोन होची गोटे इन द पर्टिकुलर कॉम इन ए वन कॉम दे विल बी कट द डिफरेंट पर्सन्स हेयर्स सो दैट वी कैन व्हेन वी कैन कट द हेयर वी कैन डू शैम्पू प्रॉपर्ली आमे फर्स्ट कोन करबा शैम्पू कर दबा फलसे सो दैट वी कैन अवॉइड द स्कैल्प रिंगवर्म आमे ताहले आमे स्कैल्प रिंगवर्म को अवॉइड करि परिबा. नेक्स्ट असला डोंट शेयर टॉवल्स देखो एठी हमर कोन हितला कंटामिनेटेड पोर्शन रो फोम टॉवल नैपकिन्स यूज करबा द्वारा मध्ये होतला तो एठी हमें ताको बंद कर दबा कोन कहला डोंट शेयर टॉवल्स combs and other personal items of infected person गोटे infected person रो जदि if the don't share towels infected person रो तारा towels combs pania and napkins we cannot personal items how kids there be personal items like different dresses that the person infected person will be wear that dresses also we can not wear हला ना ए सब जका हम कोन करबा शेयर करबा नाही बा तार जिंस को हम यूज करबा
नहीं. नेक्स्ट आसला एवॉइड टू टच पेट्स who is contaminated. जो pets, that means the animals, either it is a dog, cat or a cow or a buffalo, the infected pets, if a pet will be infected, we should avoid to touch the pet. हमें से pet को touch करिबा नहीं. or if we can touch that particular pets, we should use gloves. हमें कौन करिबा gloves use करिबा, and that gloves will be destroyed after touching to the pets. से जो पेट को टच कला पर से ग्लोव्स टाक मध्ये हमें नष्ट करि दबा. तो these are the different way we can prevent and control to spread this type of disease. एई जो हला मेथड, जो मेथड रे हम कोन करि परिबा डिजीज टाको स्प्रेड होबा को हमें प्रिवेंट करि परिबा बा कंट्रोल करि परिबा. इफ ए सब प्रिकॉशन नेला पर मध्ये बा सब जानला पर मध्ये हला नै, if a person will be suffering from this type of disease, ei jo disease re jodi suffering hela tahale how we should do the treatment, ame ehar treatment ki bhaliya kariba. to dekho ame ebe dekhiba treatment kon kariba. Keep the skin clear and dry by using alcohol or Dettol. ame eti kon kariba, keep the skin clear and dry. jo skin ro ba jo particular place re se jo ringworm ta heichi se particular place ta ame bholse safa kariba, taku ame sukhila rakhiba, keep dry and clear एवं आबे ताको सफा सुतरा रखिबा. तापरे नेक्स्ट आसला apply anti fungal powders, lotions and creams. से जो particular place में anti fungal, due to it is a one type of fungal disease, so we can use the anti fungal powder बा हमर lotion, cream. तमे जो कैंडिड पाउडर यूज करछो ताने कोन होती क्लोट्रिमाजोल तार केमिकल टा हला नै, मु कहि मेडिसिन जा मध्ये कोन कोन यूज करियो. तो apply antifungal powders, lotions and creams we can apply on a particular place where the ringworm will be affected. Next, wash bed sheets, night clothes every day during the time of infection. जो समय रे से जो पोर्शन टा जो इन्फेक्शन हेची से समय रे से जो मटेरियल्स यूज करछि एट द टाइम एट द नाइट फॉर स्लीपिंग, तार बेड शीट टा, नाइट क्लोथ्स we should wash in a warm water regularly. से कोन करियो से जो बेडशीट बस हमर जो ड्रेसेस से यूर माने पिंधी छि सेटा को हमर वार्म वाटर रे रेगुलरली सेटा कोन करियो सफा करियो, so that the disease will not spread to the others or it will be not spread to other parts of the body. से जो पोर्शन रगा other parts को इटा स्प्रेड करिबा नहीं. and we should avoid to touch that particular place where the ringworm is affected and we should avoid to itching. सेटा को हम कुंडेया पे हम टच करिबा नहीं, कुंडेबा नहीं, से पर्टिकुलर प्लेस को बारंबार छुईबा नहीं ए सब जा करिबा हमें ट्रीटमेंट. नेक्स्ट आसला if a person will be severely, देखो मु कहूची सिवियर जदि हेची माने इचिंग ताहले बा severely affected from the ringworm, then they should use antifungal cream, that is the ketoconazole. এই जो ड्रग टाको हमें यूज करिबा to apply on that particular place. जदि सिवियर हेची ताहले हमें ताको कीटोकोनाजोल अप्लाई करिया पई बोली कि हमें ताको सजेस्ट करिया कीटोकोनाजोल. ओके. नेक्स्ट, there are different type of antifungal powders, creams and lotions are also available in the market, that are the clotrimazole and the miconazole. हला नै तो सब जगह देखरे पले गुड जिंस तमे कॉमन देखि पा देखो जति कि जोल लागि जेडुअली जोल, कीटोकोनाजोल, क्लॉट्रिमाजोल, तापर नेक्स्ट असला मिकोनाजोल. ए सुजा जोल जो जगह लागि से सुजा कला एंटी फंगल ड्रग्स. ए सुजा का हम कोन बोली कोते एंटी फंगल ड्रग्स बोली कोते. तो जतोल सिवियर पर्सन देहरे हम कीटोकोनाजोल अप्लाई करिवा कहिबा एवं जदि हम नॉर्मली 1 to 2 पैचेस हेची ताहले दे शुड अप्लाई द clotrimazole and miconazole. The candid powder that generally suggested by the doctor, that is the composition of the clotrimazole. से जो candid powder टा जोडा कि हम जनरली ग्लेनमार्क कंपाउंड जोडा कि हम यूज करछे सेटा रे हमरो जनरली हमरो कोन थाउचे clotrimazole टा ही रही थाए. ए जो ड्रग टा which can prevent to spread or to minimize the sign and symptoms of the ringworm. This is all about your ringworm. You can make a note. Okay, thank you.